Good morning to all. चलिए, I hope I am audible. So we were talking about lithosphere में हम लोग बात कर रहे थे. We were talking about Earth's interior, and I would want you to quickly tell me, remind me what we had done in seismic waves. Earthquake waves की बात चल रही थी. आज उसी से शुरू करेंगे. Seismic waves. What do you remember about seismic waves? Quickly. What do you remember about seismic waves? Good morning. Seismic waves, whatever you remember about them. Seismic waves are generated from the focus. Seismic waves are generated from the focus. Seismic waves are two types: body waves and surface waves. Seismic waves are an indirect method of trying to know what is inside the Earth's interior. Good morning to all. Good morning. Good morning. Earthquake waves हैं, earthquake occurrences. So good morning to all. Is everyone okay with this? Very good, everyone. All your doubts, I can see those doubts. P waves, S waves. What is dark energy, dark matter? Science and tech class. Science and tech class teacher will teach you about dark matter, dark energy. That is a part of space technology. I start talking about that. That is this. Swati Yadav says, "Sir, आप हमेशा late होते हो." Swati, I'm very sorry. I got the connection call at 8:30, and I connected it. Sir, you've forgotten how to make us draw map. Sir, आप map नहीं बनवा रहे. Okay. चलिए, thank you. Thank you for asking the question. Sir, completed 11th NCRT. Very good. Sir, please explain yesterday's draw. Okay. Perfect. So what are L waves? L waves, R waves, and L waves are surface waves. I will teach when I am doing earthquake. आज earthquake नहीं कर रहे हैं. We are going inside the earth. The question is, if Earth is in the habitable zone, why North Pole is very cold, South Pole is very cold? Everyone, if you have read anything about NCRT sun की heat, तो आप जानते North और Pole और South Pole पर why is it cold? And habitable zone does not mean that every place will be livable. Yes or no? So India is habitable, but you want to live on the tip of Mount Everest. Yes or no? Let us look at your house. आपके घर में सब जगह पर आप रह सकते हो, but there is a bedroom or not? There is a drawing room, there is a kitchen. ये कहना कि habitable zone है तो उसमें पोल नहीं होगा, थोड़ा सा imagination और यूज करेंगे. Is everyone okay with this? Yesterday's diagram once again. Okay, perfect. After jottings in the class, is it important to rewrite notes in hands because you make right? Perfect. Okay, everyone. Now I have given 5 minutes for your doubts. Thank you for your doubts. जो भी doubts थे, I wanted to address them right in the beginning. थोड़ा सा देखने के लिए. So a reminder, Saturday we are keeping a doubt session. Ask doubts and answer writing will go into that. Second thing is maps.
सर मैप कब ड्रॉ करेंगे? व्हेन वी लर्न टू ड्रॉ मोर मैप. सो यू विल लर्न टू ड्रॉ द वर्ल्ड मैप, यू विल लर्न टू ड्रॉ द इंडिया मैप ऑल्सो when we have world geography classes, when we have Indian geography classes. Then why did we start something on that? Well, there will be many places. I will prepare you to draw maps. So if a time comes, you know, something we are talking about Australia, I will use the techniques over there. So that is going to be there. ठीक है? तो फिर से बोल रहा हूँ things happen step by step. So don't be in a hurry. अर्जेंसी अच्छी बात है. अर्जेंसी एंड हरी आर टू डिफरेंट थिंग्स. सुनो, हरी होता है जल्दबाजी. इफ यू आर इन अ हरी में वी टेंड टू मेक मिस्टेक. इन अर्जेंसी वी आर मोर अलर्ट. So my request is, I know you want to clear this exam, you want to prepare for this examination as soon as possible, but दो रास्ते हैं आपके पास. You have two choices. One is in hurry, जल्दबाजी में करते हैं, और तेजी से करते हैं, urgency. Think about it. There is an emergency and I have to reach a hospital and I have a patient with me. Yes? Should I hurry or should I be in urgency? In hurry, I will make a mistake. I will die, the patient will also die. In urgency, I will go fast with a purpose, but I will be very, very careful. Hurry makes us careless. Urgency makes us extra careful. All you smart people, early in the morning, I want you to show urgency, not hurry. Get that? चलिए शुरू करें. Why is outer core in liquid state? Why is inner core in solid state? Everyone, if you have joined the class today, तो आज उसी पे बात होनी है. So we will be talking about this. So I have taken all the notes right now. So I am not taking any more notes now. Let us look at this. Let us go back to seismic waves. We want to know what is inside the earth. We want to know what is inside the earth. Get that? We want to know what is inside the earth. And we don't have a direct method. Direct method is missing. So we wanted to find out what is inside it. So we used an indirect method, which is called the behavior of body waves. So body waves, just a recap. सभी लोग अपनी जॉटिंग्स करते रहेंगे. प्लीज कीप राइटिंग whatever is happening. Why do you have to write during the class? So that one more faculty, एक और हिस्सा आपका काम कर रहा है. You are listening to me, you are watching me, one more sense is working. तीन चीजें काम करती हैं. Retention will also happen. Yes. Why planets are goal? So ये किसी ने पूछा है. So I have a request, पिछली क्लासेस कर ले. Please do not join the class anytime, and especially people who are listening to me in recording. If you are not sitting in the live classes, make use of the ask doubt section. और पिछली क्लासेस कर लीजिए. So हर क्लास में वही पुरानी चीज नहीं हो सकती. तो P waves, S waves. Yes, first point, which one is faster? P wave is faster. Therefore, it arrives first. First to arrive, where does it arrive? It arrives at epicenter. Epicenter point on surface of earth. So if an earthquake came here, so earthquake waves traveled everywhere. Yes or no? So this point just above on the surface of earth will be called the epicenter. Is everyone okay? Okay. Somebody is writing P wave is 8 to 9 kilometers per second. Do we need to memorize this? No, we don't have to memorize this. आपकी चिंता खत्म करने के लिए कह रहा हूं. You don't have to memorize this. It is okay. Thank you for putting that in the comment. So this is faster. This is relatively slow. तुलनात्मक दृष्टि से धीरे है. Relatively slow. ठीक है. स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया था. In school I did something when my physics teacher was teaching me optics. If a ray of light comes, it goes like this. And in this case, if a ray of light comes, it bends a bit and then it comes again. What is A? What is B?
व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए स्कूल में पढ़ा है रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब देयर इज अ मीडियम चेंज हैपनिंग, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3। जब प्रकाश की तरंग अलग अलग मीडियम से निकलती है, व्हेन द लाइट रे पासिस थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, व्हाट हैपेंस? इट बेंड्स। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेज। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट। रिफ्लेक्शन पकड़ लिया आपने, रिफ्रैक्शन पकड़ लिया। नाउ P wave and S waves are traveling inside the earth. So what will happen? They will bend on change of density. ठीक है, स्कूल में पढ़ा इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नहीं जा रहा हूं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्टिक्स। यस और नो? इज एवरीवन ओके? आर वी क्लियर? तो कल जो आपने आंसर बताया था उसका आंसर एल्यूमिनियम नहीं आयरन होना चाहिए। एवरीवन, एवरीवन, डिड आई आंसर एल्यूमिनियम? डिड आई आंसर एल्यूमिनियम? स्कोर किससे बनता है? इफ आई आंसर्ड एल्यूमिनियम, माई मिस्टेक। इफ आई आंसर एल्यूमिनियम, माई मिस्टेक। ध्यान नहीं दिया होगा, इट हैज टू बी आयरन। सर ओके ओके, सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। कल भी आप पॉइंट आउट कर सकते थे एल्यूमिनियम, अगर मैंने लिखा तो माय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। उस टाइम भी आप लिख सकते थे, मैंने आयरन बोला था। आई वाज टॉकिंग अबाउट डेंसिटी डिफरेंशिएशन, डीपेस्ट में आयरन जाएगा। तो अगर गलती हुआ सो आई गेट दैट, मे बी उसमें कोड में मैंने नहीं देखा उस टाइम। बात में आई एम श्योर आई वाज टॉकिंग एंड आई वाज सेइंग आयरन विल बी देयर इन द सेंटर। इज एवरीवन ओके? तो डू वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? So can I tick mark for this also? इसमें भी सेम होता है। Get that? P waves can travel through solid and liquid. Can travel liquid only. Everyone okay? Why are we writing this? Because in UPSC मेंस में लिखना भी होता है। वन सेकेंड थिंग इज सीज्मिक वेव्स पर ही क्वेश्चन आ जाता है। सो वी गेट क्वेश्चंस ऑन सीज्मिक वेव्स, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग यू एंड आई एम नॉट लिसनिंग और रीडिंग द कमेंट्स राइट नाउ। फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस। अच्छा, P waves can travel through solid as well as liquid. Yes or no? But travels faster in solid. Faster in solid. Everyone okay? इधर can I put a cross? क्योंकि ये तो लिक्विड में चलता ही नहीं है। Everyone with me? ये फिर मैंने गलत लिख दिया, लिक्विड सॉलिड। कुछ तो चेक भी करना चाहिए, आप जाग रहे हो, सो रहे हो। यस नो? इज एवरीवन ओके with me on this? So this itself is a question. This itself can come as a question. State PCS, UPSC and prelims also. Prelims and mains दोनों में आ सकता है। ठीक है, one part is this. ये तो हमने कल किया था। Now let us go to the next one. Everyone, some of you want me to draw the diagram again, explain again, so I'm doing again. That is important. Can we make the earth? ठीक है, ये मैंने बनाया, बहुत मजेदार नहीं बनाया, फिर से बना देते हैं। कोशिश करेंगे, विल ट्राई एंड मेक इट एज सर्कुलर एज पॉसिबल। ठीक है, एवरीवन ओके? Can I take an earthquake starting point? Now my class knows it. So earthquake starting point is focus. Earthquake starting point is focus. तो एवरीवन फोकस, क्लास पे फोकस करेंगे, क्लास पे फोकस, नो मोर चैटिंग, फोकस।
Katyana Band, only on this. Is everyone okay? Are we clear? So focus say earthquake wave goes here and this is your epicenter. Epicenter. This has got seismograph 1 at time 1. P and S wave come. Is everyone okay? From focus. Please keep drawing, keep drawing. Please keep drawing. Everyone do not type any question, keep drawing. और अगर आप कर रहे हैं, so you are wasting your time, don't do that. If you are just typing, you are wasting your time. Focus here. अभी एक चीज समझ आने वाली. So we want to find out what is inside the earth. Now what happens is, we observe here. We observe, ये हमने कल एक लाइन डाल दी थी. So that we know what is 90 degrees from the focus. We observe here. Hear that? S2 seismic station 2, S3, S4, S5. Hear that? Who is doing this? Geologists. Who are doing this? Geologists. मैं नहीं कर रहा हूं. Geologists are doing that. They found P and S. They found nothing here, nothing here, and they found P here. Everyone okay? Patiently we have drawn this diagram. This is what has come. Yes or no? Everyone okay? The geologists are thinking. Geologists are thinking why this did not come. So they found out. They decided to find out कहाँ पर, which all places is it not reaching. So they found इधर से नहीं आ रहा है. (105 to 140 degrees) the waves were not coming. Abhi they don't know why. Some of you want to know why. I am saying nothing was coming here. Whatever was the seismic station, they said that the wave is not coming. Is everyone okay? एक कह रहा समझ नहीं आ रहा है. One fellow is saying not able to understand. Focus, earthquake wave has come and there are scientists who are telling earthquake wave has not come. तो इसमें समझना क्या है मुझे नहीं पता. Everyone, what is the day today? Sir, today is Thursday. Sir, I did not understand. I did not understand. जान लोगे? अभी तो explain किया ही नहीं. Yes or no? Is everyone okay? Abhi have I started explaining? I have not started explaining. I to just said what is observed. Yes or no? I to just said what is observed. So everyone, I hope you are seriously participating in the class. है ना? अगर चैट करने के लिए आए हैं तो there was a YouTube session going on and somebody came and he typed, sir आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. I said thank you. They said how do I write bad comments? I said why do you have to write bad comments? He said sir मुझको पैसा दिया. I said good, you got the money. Now you're getting the class also. Enjoy both of the things. True. तो यहाँ पर बेटा सर कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्या नहीं समझ आ रहा? अभी तो समझाया नहीं. अभी तो समझाया नहीं. सर्कल बनाया यार. सर्कल बनाया. सर्कल सर्कल. ठीक है. तो अगली बार everyone please pay attention. Thousands of people are looking at your chat. Yes or no? They are looking at your chat. If the teacher has not explained anything and you write sir समझ नहीं आया, तो सोचो तुम्हारा है अपनी खुद ही से यार. अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते यार. एक्सप्लेन तो करने दो. थर्सडे समझ नहीं आया, शुरू करते. Let us do that. Everyone please pay focus. Do not use this chat to lose the power of the class. Use it to gain power. ठीक है. तो यहां पर आ गए. Now the question is क्यों नहीं आ रहा? Why it is not coming?
So moment, this is reverse engineering. This is reverse engineering. Why it is not coming? So S is not coming. That means there must be some block. कुछ तो block कर रहा होगा. There must be something that is blocking. What can block S wave? Liquid can block because S wave passes only through solid. So that means Earth must have something liquid inside. Yes or no? Earth must have liquid inside. So how do we find where is it liquid? How do we find where it is liquid? एक काम करते हैं, let us connect the focus with this line. Focus with the point जहां पर ये रुक जाता है. Is everyone okay? Let us connect this. Let us connect this also, everyone. आप भी connect कर लीजिए. So I am doing the work which the geologists have done for us. Get that? So that means there must be liquid after this, because here it is going no problem, no problem, no problem, everywhere all good. But after this some stoppage is happening. So they said यार कुछ तो गड़बड़ है. There must be some problem. So they said ठीक है, यहाँ पर maybe the liquid part comes. Now the question will be, sir, why liquid? So obviously geologist will think अर्थ के अंदर तो गर्मी है ना, कहीं पर तो मेल्ट होगा, मोल्टन होगा. सो दे सेड लिक्विड इज देयर. सो हाउ डू वी मेक इट? सो टेंजेंट स्कूल में पढ़ा है. स्कूल में सर्कल को जो टच करती हुई लाइन होती है वो टेंजेंट कहलाती है. तो इन्होंने कहा एक सर्कल बनाते हैं जिससे ये लाइन टेंजेंट होगी. व्हाट डिड आई डू? आई मेड अ सर्कल विद दीज लाइंस एज द टेंजेंट. How did they get to know? By S wave is not coming. S wave is not coming. So everyone, let me make S wave with red color only. S wave is not coming because a liquid is coming and blocking it. S wave is coming at other places. No problem. Is everyone okay? First thing solved, that there is a liquid. Perfect. Now comes the question of P wave. Now comes the question of P wave. Why P wave is not coming? Everyone who's listening to me, now the question is, why P wave is not coming? Because you know, P wave can travel through solid as well as liquid. Is everyone with me? पहला कैसे guess किया? Because S is not coming, there must be liquid. Now the question is, why P is not coming? So, P is not coming, there must be some reason for that. So only thing, the reason is P will definitely cross. But when it crosses, remember refraction happens, bending happens. So now let me make P waves. पहले इसको red को मैं लिख दूं. Red is S wave. Red is S wave. Is everyone okay? Let me make P wave as blue wave. Blue is P wave. So now P wave comes here. P cannot be stopped, no doubt about that. But moment it changes the medium, will it bend or not? Will it bend or not? It comes here. Will it bend? यहाँ पे bend करेगा. Here also medium changes. So once again it bends. Is everyone okay? P came here. Medium change, density change. P bends. Density change. P bends again. P wave bends again. So P is reaching, but इस area में P is also not reaching. So that means P will come here. Oh yes, P will come here, P will come here, P will come here, P will come here, no doubt about that. All seismic stations will have P. Is everyone okay? But this area 105 to 140 degrees, 105 to 140 degrees did not receive any of the waves. One, because S was blocked, P got bent, and bend होने के बाद it did not do this. Sir, why only 140? Why not 160? Everyone, this is empirical observation. Geologists have found this. They have explained it by reverse engineering. ये पाया गया, ये होता ही होता है. So they said कि ये हो रहा है. This is happening in reality. Let us try to explain. First they found it happening, then they gave the reasoning.
Get that? कहीं पर भी होगा, focus may be anywhere inside the earth, they will measure the angle 150 degrees, 105 degrees from that, and this area where neither P is reaching nor S is reaching is called a shadow zone. Is called a shadow zone. Which shadow zone? P and S. And this area where P comes back again, is also shadow, but only S shadow. Is everyone okay? Everyone okay with this? ठीक है सर, इज इट 140? एवरीवन प्लीज गेट दिस. ये मैंने कहा किससे, हाउ डिड दे गेट दिस? दे गॉट इट फ्रॉम द जियोलॉजिस्ट दे रीडिंग. सम बुक्स विल राइट 104, नो प्रॉब्लम. सम बुक्स विल राइट 145, नो प्रॉब्लम. इज इट ओके? So if you are getting 145 somewhere, that is also there. Everyone okay? तो दोनों आएगा, 104, 105, 140, 145, both are acceptable. Both are acceptable. Is everyone okay? Sir, how can both be acceptable? Sir, ये गलत बात है. सुनो, दिवाली आती है 2 दिन आ जाती है कि नहीं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2 दिन आ जाती है. जन्माष्टमी 2 दिन हो जाती है कि नहीं हो जाती? चेंज ऑफ द डे. फ्लेक्सिबिलिटी कहां गई आपकी? ये सुनो, ये थोड़ी हमने कैलकुलेट किया, हमने देखा उस रेंज में आता है. इज एवरीवन ओके? अब बताइए क्या डिफिकल्ट था? फिर से रिपीट कर देता हूं. लेट मी रिपीट अगेन एंड टेल मी, इज इट डिफिकल्ट? जियोलॉजिस्ट आर सिटिंग ओवर देयर. जियोलॉजिस्ट को कोई टेंशन नहीं, दे आर नॉट राइटिंग यूपीएससी, दे हैव टू फाइंड आंसर्स. Smart people are sitting over there and they saw this is there. They have devices. That device is called S. S is a seismograph. कल बताया था seismograph. तो डिवाइस लेकर बैठे हुए. They called up E fellow. हाँ भाई, earthquake आया? Yes sir, आ गया. S2 तेरे पास आया? S3 तेरे पास आया? No earthquake sir. क्या बात कर रहा है? Change the machine. Your machine is not working. There is such a big earthquake. Sir नहीं आया, सच में नहीं आया. S4 sir, here also no earthquake. अरे भाई, earthquake has come. Check again. So we checked. And then इधर आया, sir आया, but only P wave sir, S आया नहीं. Some problem. Now this is what is called empirical observation. पहले हमने क्या किया? Observe किया. First we observe. Now we are trying to explain. If S wave is not coming, there must be something blocking. What is blocking? Some liquid must be there. So there must be something liquid inside the earth. ये हो गया, अर्थ हो गया. उससे पहले सोचिए तो सही. Everyone, if I give you a big rock, मैं आपको एक बड़ी चट्टान देता हूं. Yes, and it is made up of marble. Think about it. Everyone, imagine I give you a big piece of marble. एक बड़ा सा marble देता हूं, फुटबॉल साइज का, and I ask you what is inside it. So your logical answer will be, sir, marble. You will not say chocolate. Choco lava cake है सर, इसमें chocolate निकलेगी. Your answer will be marble. So we are standing on earth. Earth is made up of rocks. Yes or no? So if you ask what is inside the earth, rock होगा यार, और क्या होगा? But we don't know what is the state. Yes, here these geologists are able to find out. Everybody believe that earth must be all solid, but they are able to find a liquid zone. Is everyone okay? And why S wave is blocked? Why? But how they know that S wave do not travel in liquid? Physics, beta कल भी बताया. Physics of waves. They are not here coming to a coaching class and learning geography like this. They have spent their life doing MSc and then PhD in physics और waves का behavior समझा है. सर ऐसा कैसे उनको पता चल गया? अरे भाई, पढ़े लिखे लोग. Get that? So I went to there is called India Meteorological Department. तो भारत का मौसम जो है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टीचेस अस. सारा भारत का जो मौसम भवन है दिल्ली में है, लोधी रोड पर. So I was studying my masters in geography at JNU. ठीक है. So from there JNU took us to India Meteorological Department. We went to India Meteorological Department. एक field visit थी. So we saw all the satellites. Yes, their pictures coming, radars coming and everything. I was very happy to see that setup. मुझे बहुत मजा आया वो setup देखकर. And I asked one person that, how can I join India Meteorological Department? If I want to work in India Meteorological Department, what will be required?
He said, what are you doing? I said, I am doing MA Geography at JNU. He said, this place is not for MA. I said, then? He says, we want MSc Physics. Then you come to India Meteorological Department. मौसम भवन में ज्योग्राफी की जरूरत नहीं है. तो यहां पर बैठकर आप बोले सर पी वेव के बारे में कैसे पता चला? भाई फिजिक्स, कंप्रेशनल वेव्स, वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पहले उन्हें पता है. They are experts at it. They know their behavior. They know their speed. They know everything about it. They have devices also. So they are observing it. Everything is going on. और आप यहां पर क्या बात कर रहे हो? सर इनको कैसे पता पी वेव के बारे में? भाई तुमको तो कल ही मोहब्बत हुई है, मैंने ही करवाई है. और बहुतों को तो अभी मोहब्बत हुई नहीं पी और एस वेव से. ट्रू और नॉट? इज एवरीवन ओके? तो वाई नॉट गैस एट शेडो जोन? ये गैस कहां से ला रहा है? अर्थ के अंदर सारी चीजें तो मिक्स्ड है ना बच्चे, तो इमेजिनेशन तो हो ही नहीं रहा है, इमेजिनेशन हो नहीं रहा है. तो आपने क्या किया? आपने सारा खाना लिया, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, सब मिला दिया है. Yes or no? Earth has got everything inside it. Now what is Earth? Earth is a mix of all the elements. तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चीज गैस में है. इट इज आइदर सॉलिड और लिक्विड विद सम गैस ट्रैप्ड इन इट एंड गैस वांट्स टू कम आउट. सिंपल. यस और नो? अब किसी ने कहा सर व्हाई इज इट बेंडिंग? अभी क्लास से पहले बताया ना, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी बताई उसकी. Did we say that when they change the medium they will bend? Yes or no? So you cannot stop P wave. P wave तो आएगा ही आएगा. P wave will come, but it will not come in this direction. Expected direction was what? This was expected or not, but it got bent. This was expected or not? Yes or no? Expected से deviation हो जाता है. Yes or no? Is everyone okay? YS1T1 ये वो वाले बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे होंगे, है ना, किलो के हिसाब से. अर्थक्वेक का पहला वेव कम्स एट एपिसेंटर. एपिसेंटर में सीज्मोग्राफ है जिसको हमने एस कहा. मेरी गलती हो गई, मैंने उसका नाम 1 मान लिया. यस. और कब आया? इट कम्स फास्टेस्ट हेयर, सो टाइम 1 पर आया, T1. इतनी सी बात. यस वन. एवरीवन ओके? तो अब और बचपने की बात नहीं करते, ठीक है. हमने पहले भी किसी ने कहा था, रिमेंबर समबडी सेड सर यहां से तो ठंडा पानी आता है सर, आप बोल रहे हो अर्थ गर्म है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. अर्थ हैज गॉट, यहां पर भी वाटर है. अब बताइए, एक पार्ट ऑफ वाटर इज ट्रैप्ड ओवर हेयर. ये कोई लेयर है? एवरीवन, देयर इज अ पॉकेट ऑफ गैस ओवर हेयर. थोड़ा सा हाइड्रोजन फंसा हुआ. इज दिस अ लेयर? कोई ये लेयर हो सकता है? नहीं हो सकता. एवरीवन, सिंपल सी चीज है. Straight ways, P was coming, P got bent and S was able to get blocked at this. Is everyone okay with the interior part of this? यहां तक क्लियर सब लोग? तो ये आपने ड्राइंग बना ली होगी. दिस इज अबाउट अर्थ्स इंटीरियर. लेट मी गो बैक. ये बनाया आपने और यहां पर क्या आया? 105 to 140. इस एरिया में the signal is not reached. This is Earth's interior, this is outside. Earthquake center is there. ठीक है, ये आपने बना भी लिया है just in case you are there. So what is a shadow zone? What is a shadow zone? Shadow zone is the zone in which P wave or S wave does not come. Is everyone okay? शैडो जोन मैं लिख दूं इस पर. एवरीवन, व्हाट इज द शैडो जोन? जोन इन विच P और S और both body waves do not reach. Did we see P was not reaching here? S was not reaching here. Why S was not reaching? You can see S waves, they will be stopped by the liquid. Is everyone okay? And P waves, they will be bending. Do we get that?
तो P और S नहीं पहुंचा तो अर्थ पे क्या होगा? इफ एन अर्थक्वेक कम्स हियर, दिस प्लेस, इफ देयर इज एन ऑब्जर्वेशन सेंटर, there will be no earthquake wave in that observation center. Everyone okay with shadow zone? But P wave reappears here. P wave reappears at this point. So that is why I am saying this is P and this is P wave shadow zone, but this whole thing is S wave shadow zone. Is everyone okay? मैं सोच रहा था कोई ना कोई मासूम जरूर ये सवाल पूछेगा, कोई ना कोई मासूम जरूर ये सवाल पूछेगा। इंटरेस्टिंग। किसी ने कहा सर व्हाट इफ द फोकस इज हेयर? ये मासूम सवाल आएगा ही आएगा। सर व्हाट इफ द फोकस इज हेयर सर, देन व्हाट विल हैपन? अबे सुनो, इफ द फोकस इज देयर तो ये पूरा घूम जाएगा ना, फिर यहां से बनेगा, फिर लाइंस विल बी ड्रॉन फ्रॉम हेयर ना, फिर इससे मेजर किया जाएगा। वी विल मेजर फ्रॉम हेयर 105 टू 140। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। सर अगर इसी में फोकस हो गया, अरे वेर एवर द फोकस इज, उससे विद रेफरेंस टू द फोकस। डू यू गेट दैट? इज एवरीवन ओके? फिर से रिक्वेस्ट है, क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अगर नहीं समझ में आया अभी इसी वीडियो को दोबारा देख लेंगे। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड वाइल वॉचिंग प्लीज ड्रॉ। एवरीवन ओके विद दिस? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते। सीस्मिक स्टडीज, एक सवाल ये आता है, अर्थ core is liquid. Core is liquid, yes or no? Earthquake has come. Earthquake has come. Where will we not receive P and S wave? Where will we not receive P and S wave? Everyone, चलो यहां से लाता हूं earthquake, चेंज कर देता हूं। Where will we not receive? Everyone, where will we not receive P and S wave? बना दूं? Did I make it? So this is going to be 90 degrees. Yes. Can I say from here 105 to 140 nothing will be received? Is everyone okay? Wherever the focus is, focus say that much distance we will not get P and S wave, but P will come. P will come. P will come. P will come. Yes or no? S will not come. And in this area, P and S both are not coming. Everyone with me on this? यहाँ तक clear? Very good. All of you are smart. 105, 140. कुछ लोग अभी भी 145 लिखना चाह रहे, no problem. Is everyone okay? Very good, smart people. Now everyone tell me. Everyone tell me one thing. Everyone please tell me one thing. A and B are at a distance of 100 kilometer. I have a car. I have a car which is traveling at 10 kilometer per hour, started at 10 a.m. in the morning. When will it reach at point B? Time बताइए। A car is starting from 10 a.m. in the morning at 10 kilometers per hour. What time will it reach at point B? So how much time will it take? It will take 10 hours. Add 10 hours to 10 a.m. 8 p.m. आ जाएगा?
Is everyone okay? If the distance is known, if the distance is known, if the speed is known, can time be calculated? Everyone okay? Simple, simple, very good. Geologist is a scientist. He knows the speed of P waves. He knows the speed of P waves. He is a scientist. He knows the speed of P waves. अभी किसी ने लिखा था 8 to 9 kilometer per second. He knows it. You don't have to know it. He knows the speed. He knows the distance between F and A. He knows the distance also. Because he knows where the focus is. He knows which part of the earth is A, B and C. Can he tell me the time also? Everyone please tell me, क्या possible है वो time बता दे? Can a geologist who knows the speed of P waves, can he tell me when will the P wave arrive at A, B and C? Can he tell me or not? A geologist knows it. Very good. Distance by speed करके वो time बता देगा. Is everyone okay? बता सकता है? So geologist knows the distance. He has ways of finding out where is the focus located and he knows where it is coming. Yes, geologist ने कहा this will reach at TA, TB, TC. Geologist has already predicted. So moment a earthquake comes, there is a center at A, center at B, center at C. Centers को बोला, centers did you receive earthquake? So what did the center ABC said? Yes sir. Did you receive both P and S? They said no, we did not receive both P and S. Sir, we are in the shadow. S did not come sir. हम तो opposite side पे only P came. They said very good. What was the time? Did you get it at TA, TB, TC? They said almost. The question was why almost? I know the distance, I know the speed. Sir, actually it came before. TA से पहले आ गया, before आया, before. Yes or no? Everyone. Something is happening. Something is happening. Yes or no? Something is happening. P wave is traveling through X. P wave is traveling through Y. P wave is traveling through Z. X plus Y plus Z is the distance. P wave will have different speed. Speed here, some speed here, because in liquid it has different speed. Yes or no? Which is faster? Which is faster? Speed fast, speed slow, speed fast. Sir, why fast and slow? Remember property of P wave. P wave travels faster in the solids. Is everyone okay? I have speed also, speed 1, speed 2, speed 3. अब मुझे speed भी पता चल गया, average speed, but my time is wrong. My time is wrong. Please listen to this. P wave is traveling. I know the distance. I know their speed in different mediums. They know, some people are thinking sir medium change हो गया. So they know with bending how much is the speed, how much is the bending. They know it. They know it and they have calculated a time. Okay, and it is coming wrong. Time is coming wrong. कुछ गड़बड़ है. Can the scientist take that observation? Can he ignore? No, scientist does not ignore. Everyone, यहाँ पे कितने बजे आनी थी कार? Go back to this. Forget the earth. Forget the earth. ये कार कितने बजे आनी थी? 8 PM. This car came at 12 PM. 12 बजे आ गई, नून बजे आ गई, नून पर ही आ गई. तो क्या हुआ होगा? If this has happened, you said 8 PM, but the car started from here and reached here by noon. नून पर आ गई. तो क्या suspect करूं? What would have happened? No, it did not come at 8. It came within 2 hours. तो क्या guess करेंगे? What will be the guess if I say that the car came within 2 hours? It did not take 10 hours. What will your guess? What will be your guess?
कोई कह रहा है पाथ कट कर दिया, शॉर्ट, भाई डिस्टेंस यही है, डिस्टेंस फिक्स है, तो डिस्टेंस वाज 100 किलोमीटर। क्या चेंज हुआ होगा, क्या गेस करो जल्दी से सर। बीच में स्पीड बढ़ाया होगा, क्या किया होगा, व्हाट वुड बी द स्पीड देन, 10 किलोमीटर पर आवर, क्या किया होगा, द स्पीड चेंज कितना किया होगा, हाउ मच वुड इट हैव डन, द कार वुड हैव गॉन फास्टर। सर ये 50 पे चला होगा तभी पॉसिबल है, यस और नो। इफ द टाइम टेकन हैज रिड्यूस्ड दैट मीन्स समवेयर द स्पीड वुड हैव इंक्रीज्ड। एवरीवन ओके? पता नहीं क्यों कुछ लोग यहां पे रोटेशन रेवोल्यूशन कर रहे हैं। कार है ए टू बी जानी है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 आवर्स में पहुंच गए। सोच रहे थे इट विल कम इन 10 hours because it was supposed to go at 10 kilometer per hour, but the car was better. हमने अच्छी कार दे दी, उसने 50 पे चला दिया। Possible or not? Forget the car. P wave was supposed to come here. जल्दी आ गया, तो क्या हुआ होगा? What is your guess now? P wave was supposed to come at a time ta, but it came faster. Guess what would have happened? Guess what would have happened? Speed increase hui, very good. So somewhere speed must have increased. So for geologist, increase of speed means P wave goes faster in which medium? Which medium? Sahab, there must be a solid somewhere. So there was a woman, there was a female geologist, एक lady इसको study कर रही थी, and she found that everywhere the P wave comes faster. So she went to her senior and she said, sir, I suspect, I want to make a logical guess that there is something solid in the core. Core is not just liquid. Core is not just liquid, sir. There is something solid in the core. So the senior said, what? What nonsense? It is not possible. It is so hot. Why will it become solid? He says, sir, the only way we can justify the speed, there must be solid. He said, no, I don't believe. He said, let us talk to other geologists. All geologists of the world started thinking on it and they came to a conclusion, yes, there must be a solid, then it is possible. Do we get that? Now the question will come, sir, if it is solid, then why it is solid? The geologists have to answer that also. So geologist said, we are prepared for the answer. तो geologist ने क्या कहा, अब हमें आंसर भी तैयार है हमारे पास. This much is liquid, this part is liquid, this part is solid, and the core is outer core. Why is it outer? Because it is outside and this is inner core, and inner core is solid. Why? It is very hot. It is very hot, yes. Yes. Rocks are molten. Rocks can melt. Yes, that is also true. Then why solid? But solid due to compression. Due to compression. Why compression? Weight of overlying layers. It becomes so heavy that whatever liquid was there, it becomes so heavy that यहाँ पर ये solid हो जाता है. Is everyone okay? Everyone okay? What is it made up of? Don't get into that. वो तो density differentiation से. What element is there? That is from density differentiation. But did we get this? That the Earth's interior is, the core is liquid as well as solid, and that is why it is hot. It should have been liquid. It should have been liquid, but because of the weight, it has become solid. Everyone okay? कैसे पता चला? Imagine कितना बढ़िया काम करते हैं geologist. And science learns from its mistakes. So first, when they found out there is a liquid, they were very happy.
Second, when they found out some mistakes are happening, they decided to check it and then they came to this. Is everyone okay? Compression से liquid को और compress किया, because of the weight the liquid turned into solid. Is everyone okay? Yes, yes, yes. Everyone, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है? Do you have LPG cylinder? Do you know what is LPG made up of? Do you know what is LPG made up of? C3, C4, propane and butane gas. Everyone, LPG cylinder has gases propane and butane gas. When you switch on the burner, burner से क्या निकलता है बाहर? Burner gives gas. But please check the cylinder. Next time when you get, please check the cylinder. In cylinder, it is not gas, it is liquid. So my question is, how can propane and butane, which are gases at room temperature, how are they liquid? How are they liquid? सिलेंडर को शेक करना, अगली बार हिला के देखना, सिलेंडर को हिला के देखना, you will feel there is liquid in that. इसीलिए उसको L कहा जाता है, liquefied. Why is it liquid? Everyone, why is it liquid? सर वो कंप्रेस किया है सर इसको. It has been pressurized, sir. In my car also, sir, there is something called as CNG, compressed natural gas. Yes or no? Pressure. Everyone, please tell me, can pressure cause change in state of matter? Can pressure, क्या दाब के कारण, अधिक दाब होने के कारण क्या स्टेट ऑफ मैटर बदल सकता है? क्या कोई चीज गैस से तरल बन सकती है या नहीं? इज इट पॉसिबल और नॉट? तो एवरीवन, आई वांट यू टू नाउ टेल मी व्हाई लिक्विड कोर became solid. Why did the state change? The answer is pressure. Pressure of what? Pressure of the overlying layer. Is it hot? Oh, it is the hottest. If left naturally, what would it want to be? It would want to be liquid. But under pressure, what has happened? Under very, very high pressure. Yeah. Everyone okay? ये तो था explanation. तो किसी ने कहा सर मुझे explain नहीं आया था, अब किया है मैंने explain the internal structure of it. Everyone, this is the figure. आपने ड्रॉ भी की है, NCERT में भी पढ़ा होगा. I hope you get that. ठीक है? तो हमारे पास क्या है? P wave जा रही है, S wave जा रही है, and we are looking at focus and the waves are coming and we are getting, this is S1. Everyone, ये देख लीजिए S1, S2, S3, T1, T2, T3 थोड़े समय के बाद आएगा. Everyone okay? बहुत सिंपल था यार, बहुत सिंपल था. सिर्फ डायग्राम बनाना था और ये समझना था कि कैसे पता चला. हाउ डिड वी गेट टू नो व्हाई एस वेव इज नॉट कमिंग? दे मस्ट बी लिक्विड. ओके, व्हाई पी वेव इज कमिंग फास्टर? देयर मस्ट बी समथिंग सॉलिड. कहां होगा? जियोलॉजिस्ट आर डूइंग. यस और नो? एक्सप्लेन व्हाई इट इज सॉलिड. इट इज सॉलिड बिकॉज ऑफ द प्रेशर. एवरीवन ओके? अब ये डायग्राम बनाना है. एक डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ. एवरीवन, लेट अस मेक द डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर. जो एग्जाम में आएगा वो भी तो पता होना चाहिए. Explanation done? Okay, everyone. I am going to make the pizza slice diagram of Earth. तो पृथ्वी का एक पिज्जा खाया आपने, पिज्जा की स्लाइस वाला डायग्राम हम बनाने वाले. 6371 kilometer. Geologists have told us this. Get that? जियोलॉजिस्ट ये बनाना है, सब लोग बनाते जाइए इसको. With me on this.
This is called crust. This is called mantle, and this is called core. This we already know. Yes or no? At what depth? 2885. 2885. Can I write not drawn to scale? अनुपात सही नहीं है. This is just a diagram. Yes or no? Somebody is saying P wave is bend, should bend twice. बेटा मैंने भी 2 बार बेंड किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो. P wave came here, it was bending here. Then बेटा I made another normal, it was bending here. 2 bend हुए. Get that? Everyone please pay attention on this. उसको बाहर आ जाइए. You will have a chance to watch the video again. ये बनाएंगे. Everyone with me? Crust पे आप हो. This part is called continental crust. But 70% of Earth is covered by water. तो आप कहाँ पर हो? You are on this boat और चप्पू चला रहे हो. This is what ocean. तो ओशन के नीचे का क्रस्ट इज ओशियानिक. E और O, everyone keep just keep writing it. Just write 2885. Which distance I will tell you. बेटा मेंटल ना, फ्रॉम द सरफेस टॉप से चले, हम टॉप से चले एट द डेप्थ ऑफ 2885 किलोमीटर. मेंटल एंड एंड कोर बिगिंस. इज एवरीवन ओके? अब मैंने लिख दिया 6371. कोई क्या लिख रहा है? 6370. अब बताओ क्या करूं मैं इसका? एवरीवन, व्हेन डिड द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ दिस थिंग हैपेंड? आजादी का पहला आंदोलन कब हुआ? फर्स्ट रिवोल्ट हैपेंड 1857, 1858, 1856, 1857 एंड अ हाफ. ये लोग बेचारे 8 PCS के एग्जाम देखकर, SSC के एग्जाम देखकर इनका विश्वास उठ गया. दे हैव टोटली लॉस्ट इट. सर कुछ भी पूछ लेगा सर, डेसिमल तक याद करना है. UPSC डज नॉट डू. UPSC क्या करती है? सीधा पूछती है. तो एवरीवन, इफ यू आस्क मी, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, मैं तो इसको कभी लिखता भी नहीं, मैं तो अप्रोक्सीमेटली 6400 याद करता हूं. लर्न टू अप्रोक्सीमेट 6400 किलोमीटर, अराउंड 6400. प्लीज डोंट राइट 6371 है 6370. ये रटे हुए कहीं नहीं जाने वाले. ठीक है, आगे बढ़े. तो एवरीवन दैट इज देयर, ये हमें पता है. नाउ वी आर लुकिंग एट कोर में. देयर इज अ लिक्विड कोर एंड देयर इज अ सॉलिड कोर. Everyone okay? 2 types of core are there. Now somebody asked a question, sir, which one is hotter, outer or inner? पहले ही बताया था कल. As I go inside, what happens to the temperature? Temperature increases. So is the answer very clear? Which is hottest? This is hottest. यहाँ पे क्या temperature है? 6000 degrees Celsius. Is everyone okay? Sir, when it is hot, then why it is solid? अभी तो बताया था. Why fight? You are hot, you may be hot no matter what. तुम जितने भी बन लो, पिताजी के सामने ऐसे ही रहोगे ना. True or not? So the pressure was able to bend it. Yes or no? Is everyone okay? कोई काउंट कर रहा है सर, P वेव के जो हैं सर इतने होने चाहिए, 4 बेंड्स होने चाहिए, 5 बेंड्स होने चाहिए. जितने करने कर लो. Yes? So somebody is saying that P wave should have 4 bend. मेरी बला से 50 बार बेंड कर ले, मुझे टेंशन नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ब्रॉडली वॉट जियोलॉजिस्ट आर डूइंग. दे स्पेंड ईयर्स डूइंग दैट. आई डिड दैट विद यू 10 मिनट में. 10 मिनट में जियोलॉजिस्ट मुझे बता रहे सर कितना बेंड करेगा, यहां मुड़ेगा वहां. अरे जहां जहां मोड़ आएंगे जीवन के मुड़ेगा. वो पहली मिली उसने मना किया, फिर मैं मुड़ा. दूसरी मिली उसने मना किया, फिर मुड़ा. जब तक नहीं मानी तब तक मैं मुड़ता रहा. टेंशन में सर इतनी बार मुड़ेंगे.
वो देखो सर की क्लास देखते हुए गोभी पराठे का मजा ही कुछ और है। सोचो ना, गोभी पराठा खा रहा है और फिर बीच में डाउट पूछेगा सर ये मुड़ा कितनी बार। अरे जब जब उसके मोड़ आए मैं मुड़ गया। डिड वी अंडरस्टैंड दैट? तो बड़ी पिक्चर हमें दिखाई नहीं देती, बड़ी पिक्चर हमें दिखाई ही नहीं देती। तो sometime earthquake come in our neighbor country recently Pakistan but not explained here why. Don't worry, earthquake, this class was not on earthquake, this class is on earth's interior. I have a class on earthquake, I will tell you, don't worry. Everyone, can we come back to this? ठीक है, यहां से फोकस आया, if the focus is here, earthquake wave will come, yes or no? So it was found that crust is solid. Both P and S waves are traveling through it. Both P and S waves, so पता चल गया they are solid. Now what happened was suddenly the speed and other things changed and some bending happened. So that means it has ended. So this is called the boundary of crust. This is called moho discontinuity. Discontinue मतलब खत्म होना, new things started. So what ended? Crust has ended, mental has started. Crust has ended, mental has started. Mental में से P और S wave दोनों चलते हैं. तो is mental liquid or solid? Is mental liquid or solid? Because both of them are traveling through it. तो सर होगा तो solid ही. So I am saying it is a solid. It is a solid but deformable solid. Is everyone okay? How did I get to know that it is solid? Because S wave were passing through it. From outer core, no S wave. So I was very clear. What is this? This is liquid. Is everyone okay? And how did I get to know it is solid? उधर मैंने guess किया. Is everyone okay? Now mantle. Mantle is the largest area. So 80% by volume. 60% बाई वेट. अर्थ का इंटीरियर क्या है? मेंटल है. तो मेंटल इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस एरिया. सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? मेंटल है. एंड व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स आर देयर? सॉलिड बट डिफॉर्मेबल. सर व्हाट इज डिफॉर्मेबल सॉलिड? तो आपने गीली मिट्टी ली है, गीली मिट्टी, यस. क्ले जिससे खेलते हैं, जिससे कुम्हार अपना घड़ा बनाता है, यस और नो, द पॉटर्स व्हील दैट विल बी देयर. या यू वुड हैव सीन पुट्टी टू फिक्स ग्लास इन द विंडो. आपने पुट्टी देखी है, क्ले देखा है, तो उसको पकड़ के बनाया जा सकता है. रोटी जब बनती है तो दैट इज दैट. तो इज इट सेमी लिक्विड? इज इट सेमी लिक्विड? क्यों कोई सेमी लिक्विड लिख रहा है वो मुझे पता नहीं. किसी ने कहा सेमी डिफॉर्मेबल. मम्मा रोटी बनाती है, मम्मा मेक्स रोटी, तो उससे आटा मलने के बाद कैसा होता है? जब आपको आटा मिलता है, द डो नीडेड के बाद कैसा होता है? टिप. ये सुनो, समझ में आ रहा है? एवरीवन ओके? तो सॉलिड है बट डिफॉर्मेबल. दिस इज लिक्विड दैट्स देयर. ये किससे बना? सियाल से बना. सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मोहो डिसकंटिन्यूटी. मोहो इज आफ्टर द नेम अ सर्बियन फेलो, हिज नेम वाज मोहोरोविचिक. उनके नाम पर इस लाइन को निर्धारित किया गया. आफ्टर मोहो डिसकंटिन्यूटी व्हाट हैपेंस? द क्रस्ट एंड्स एंड दिस थिंग स्टार्ट. तो फिर यहां पर भी होगा. डेफिनेटली देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी हियर. What is that? This is called Gutenberg discontinuity. Is everyone okay? So geologists have even found out what is the difference of state. Is everyone okay? Moho discontinuity, Gutenberg discontinuity, crust, mantle, core. Core is of two types. Is everyone okay? Everyone with me on this? Please pay attention. This is solid, yes, and this is semi-solid or this thing. Why? Why is mantle soft rocks, soft deformable rocks, and why is crust hard rock? Everyone quickly tell me. Yes or no? Quickly tell me. Why is mantle softer rock? Why is mantle softer rock? Sir, because it is hotter. Perfect. Temperature ज़्यादा है ना सर. आप ही ने तो बताया सर temperature is increasing. Very good. Very good. Everyone please pay attention.
that within the mantle, this part is still solid. ये अभी भी rigid solid है. This part is softer solid and this part is deformable solid. Is everyone okay? So mantle is not all solid. As the temperature is increasing, this part is rigid. Rigid solid मतलब चट्टान की तरह. Similar to crust. This part is similar to crust and this part is a little softer. और नीचे जाएगा तो और soft. Can I say almost molten? Can I say almost molten? This part will be almost molten because the temperature is increasing. So everyone, geologists have divided based on their nature. They have divided mantle into inner mantle and outer mantle, and this is 700 kilo. Inner mantle and outer mantle based on their properties. Based on their properties, mantle को भी दो भाग में विभाजित करते हैं. We divide them outer and inner. What are the properties? We need not be worried about. Get that? We are interested only in this. Everyone, please pay attention. I am interested only in this top 100 kilometer because this top 100 kilometer is rigid solid. Top 100 kilometer. Is everyone okay? Top 100 kilometers is made up of what? Rocks which are solid. उस पे pressure दोगे तो टूट जाएगा. That is called rigid. Yes or no? इतना क्या है? ये तो crust हो गया. What will I call this? What will I call this layer? छोटे से layer को मैं क्या कहूँ? It is a part of which mantle? It is a part of outer mantle. Yes or no? नहीं नहीं नहीं, रिजिड का मतलब समझिए. कुछ लोग रिजिड नहीं जानते हैं. रिजिड आपका फोन है. एवरीवन, फोन है. फोन पे प्रेशर डालूंगा तो टूट जाएगा. इफ आई प्रेशराइज दिस फोन, व्हाट विल हैपन? फोन विल क्रैक. बट इफ आई टेक दिस वायर कैन इट बेंड और नॉट? वायर कैन बेंड. यस और नो? लिक्विड कैन बी डिफॉर्म्ड बट सॉलिड मीन्स प्रेशर डालेंगे तो क्रैक कर जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिजिड रॉकी सॉलिड. इज एवरीवन ओके विद दिस? सो आई एम सेइंग अ पार्ट ऑफ द mantle is also rigid and that is called outer mantle. Is everyone okay? Outer part of the outer mantle is almost the same rigid like this. Everyone okay? तो geography क्या पढ़ती है? What does geography read? Everyone, what is geography? Geography क्या पढ़ती है? Geography is the study of surface and surface is the outer rigid surface which is lithosphere. So does geography study crust? No, it does not study only crust. Geography studies lithosphere and I want to write here everyone, lithosphere is the rocky sphere which is equal to crust plus OOM. Everyone understood what does geography study? Geography studies the surface of earth and lithosphere does not mean crust. Lithosphere crust bhi hai and a little bit of mantle which is solid. Is everyone okay? Everyone okay? Because if somebody was talking about surface of earth, what will we say? Geography studies crust. Geography does not study crust alone. Geography studies what? Geography studies the crust and the outer mantle. उसके बाद आता है 100 to 400 kilometers में एक special layer है. This layer is called asthenosphere. आज
Today I am not explaining what is asthenosphere. This asthenosphere will be explained. This asthenosphere will be explained when I am doing plate tectonic. Can you draw this, everyone? Have you drawn this? Sir, if temperature is increasing, so why outer core is in liquid? Everyone, can you tell me why outer core is liquid? Why? Because beta rocks melt. आउटर कोर को लिक्विड एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात है? टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, मेल्ट हो गया. यस और नो? हैव यू सीन अ कैंडल, वैक्स कैंडल? यस और नो? वैक्स कैंडल, व्हेन यू हीट इट, पहले वो सॉफ्ट बनता है, फर्स्ट इट बिकम सॉफ्ट एंड देन द वैक्स मेल्ट्स. तो पहले सॉलिड कैंडल, then semi-solid candle, then molten candle, that's all. Yes or no? Is everyone okay? Have we drawn this? Very important. इसी पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. मोहो, गुटनबर्ग, everyone. Everyone with me on this? कहां से रिवाइज करेंगे अपने जॉटिंग्स को? कहां से कंप्लीट करेंगे? वेयर विल वी कंप्लीट देम फ्रॉम? एनसीईआरटी क्लास 11th. यही डायग्राम दिया हुआ है. दिस डायग्राम इज देयर. चैप्टर ऑन अर्थ इंटीरियर. ये कल भी होमवर्क दिया था, कर लेंगे. इनर मेंटल आई टोल्ड यू इज सॉलिड. Why? This is liquid because rocks are molten. Why? Because of compression. Because of pressure. Why is it solid deformable? Because of heat. Why is it still rigid? Less heat. Yes or no? बट इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीजेज एट व्हाट रेट? कल बताया था 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर. तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इनसाइड द अर्थ. व्हाई इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग इनसाइड द अर्थ? 2 रीजंस. वन इज द रेजिडुअल हीट, जब अर्थ बना था तब की हीट है. सेकेंड इज रेडियो एक्टिविटी. So if you have been attending my classes regularly, you know that what is there. The outer mantle, asthenosphere, बाद में बताएंगे. एवरीवन ओके? ये आपका डायग्राम है. मोहो डिस्कंटिन्यूटी एग्जाम में पूछता है. बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल वी हैव मोहो. गेट दैट? बिटवीन मेंटल एंड कोर वी हैव गुटनबर्ग. Between the outer and inner mantle or upper or lower mantle, same upper lower mantle, same, that there is a discontinuity called repetiti. Is everyone okay? Or the discontinuity between the liquid outer core and inner core is called Lehmann discontinuity. ये याद करना है. Yes. और ये जो है, क्रस्ट में भी रॉक्स अलग हैं. अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट में बीच में क्या आ गया? कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी. क्रस्ट में भी अपर और लोअर होती है. इसको बड़ा करके दिखा दिया आपको. दैट इज देयर. तो इफ यू कम अक्रॉस दिस डिस्कंटिन्यूटी, व्हाट इज अ डिस्कंटिन्यूटी? डिस्कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? डिस्कंटिन्यूटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिस्कंटिन्यूटी? दैट मीन्स द नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ रॉक्स चेंज. इज एवरीवन ओके? टाइप ऑफ रॉक्स चेंज. यहां पे रॉक्स चेंज हुआ. यस और नो? यहां भी रॉक्स चेंज हुआ. देयर वाज अ चेंज हैपनिंग इन हेयर ऑल्सो, दैट वाज कॉल्ड कॉनराड. यस. हेयर repetiti. Here Lehmann. Sir, who are these? These are the name of the people, name of the geologist who found the change happening. उन्हीं के नाम पर we have put the names. Is everyone okay?
Everyone okay? What is a geographer interested in? मैं किस में interested हूँ? Everyone, what am I interested in? Am I interested in the core? No. Am I interested in the mantle? No. Who is interested? Geologist. Lehman is interested. Repetiti, Conrad is interested. Gutenberg, Moho, they are interested. I am a geographer. I am interested only in this top 100-kilometer layer, which is solid, rigid, and brittle. Yes or no? Everyone okay? बिल्कुल. Discontinuity means break or change. That is discontinuity. With me on this? Everyone, where are we now? Geography is the study of. Geography is the study of lithosphere. And what is lithosphere? Lithosphere is the land and ocean bottom. Get that? Lithosphere is the rigid, rocky. Lithosphere is the rigid rocky sphere. It is 100-kilometer deep. It is 100-kilometer deep. And what is it made up of? What is it made up of, everyone? Crust plus outer mantle. ये पता होना चाहिए. Everyone, you should be knowing this. If you know this, the job is done. Everyone clear? Okay. Are we clear about this? Any questions on this? I will take any questions on this. Outer mantle, जो भी solid है वो, we are talking about that. My computer has gone off to sleep here. Okay. Let me also show you this part. The geography is focused only on this part. Let me show you a picture जो इसको magnify करेगा. We are not interested in this. We are only interested in this. Everyone, am I interested in this bottom core? No. Am I interested in outer core? No. Am I interested in mantle? No. Upper mantle, lower mantle? No. I am only interested in the lithosphere. ये lithosphere ऐसा है. Continental crust, oceanic crust, and they are right. They are on what? Asthenosphere. They are resting on asthenosphere. Continental crust, lithosphere. Can you see part of this is what? Part of this is mantle, and where are we resting on? Asthenosphere. Is everyone okay? Sir, what is gravity, anomaly and propagation? Science and tech class, beta. Science and tech class. Everyone okay? Done? Okay, everyone. I'm going to school now. चले थोड़ी देर स्कूल में चले. School days. School days में they told me that when electrons are moving in a wire, that is called current. Electrons, when they are moving in a wire, that is called current. सबको याद है? तो इस वायर में, this is the charger,
This wire is having current in it. Is everyone okay? Clear? Now they also told me that this wire has current, but it also produces magnetism. And what? They said अगर इस वायर को ऐसे बेंड कर दो, this wire is like this and you bend this and let electrons pass through this. इसको क्या बोला? कॉइल बोला. तो कॉइल बोला. एंड दे सेड इसको लेकर रोटेट करना शुरू करो. इफ यू रोटेट इट, यस, इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. और अगर आपके पास यहां पर कुछ मेटल है जिससे मैग्नेट बन सकती है, तो वो मैग्नेट बन जाएगा नॉर्थ और साउथ. करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म. How many of you remember this from school? How many of you remember this from school? Electrons flowing through the wire is called current, and current, when it flows, current can produce magnetic field. What you do is allow the current to flow and put magnetizable material, ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबकत्व आ सकता है, उसे लगा दीजिए, तो करंट के चलने से चुंबक पैदा होगी. रिमेंबर दिस? सर समझ नहीं आया था, बट आई डू रिमेंबर समथिंग लाइक दिस. यस और नो? यू रिमेंबर? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे नहीं पढ़ाया गया ये सब. आज बता दिया. आंखें कभी भी खुल सकती, जब जागो तब सवेरा. जो आपका करंट है वो मूविंग, चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट, और उससे मैग्नेटिज्म आ सकता. इज इट ओके? देखो अचानक कोई आ गया, सर ड्यू टू फैराडे रूल और ये और वो. फैराडे मन्ना डे मेरे लिए सेम है. गेट दैट? ज्योग्राफी टीचर जबरदस्ती साइंस तो करवाना मत. लेफ्ट हैंड थंब, राइट हैंड थंब, कूलम्ब टूलम्ब नहीं चाहिए. इतना सिंपल पूछ रहा हूं, ये स्कूल में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूसिंग करंट, करंट कैन प्रोड्यूस दिस थिंग, और इसको कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है? दैट्स ऑल. क्रस्ट इज ऑल रिजिड, क्रस्ट इज ऑल रिजिड. ठीक है, यहां तक है ना? अब मुझे मैग्नेटिज्म में रिसर्च ना करनी है ना करवानी है. ठीक है? ये क्या है? कोर. सेंटर ऑफ द कोर निकल एंड आयरन. सेंटर ऑफ द कोर is nickel and iron. Everyone okay? Nickel, iron, cobalt. Fe is iron or nickel are good metals to make magnet. Is everyone okay? Everyone with me on this? So can I say the inner core, solid inner core, solid inner core is magnetizable. Magnetizable. Everyone with me? Solid inner core is made up of iron and nickel, and it is magnetizable. Magnetizable material is available. Everyone, what is available? ये है tick mark. This is available. I want to make it magnet. What is needed? अब बता दो क्या चाहिए? Everyone with me on this? This is available. Magnetizable material is available. To make it a magnet, what is needed from your school days? Tell me what is needed. The current चाहिए.
करंट चाहिए, वेरी गुड. व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? वो कह रहा है कॉइल चाहिए. अबे कॉइल है बेटा, वहीं पे कॉइल है, कॉइल में कुछ चाहिए तो करंट चाहिए. व्हाट इज करंट बच्चों? चार्ज इन मोशन. चार्ज इन मोशन, वेरी गुड वेरी गुड. तो एक बात बताओ, कभी आपको ऐसा हुआ, हैज इट हैपेंड दैट समबडी टचेज यू और आपको स्पार्क लगता है? हैज इट हैपेंड? किसी के कपड़े को, नाइलॉन को टच किया एंड देन इट गिव्स अ स्पार्क. हैज इट हैपेंड? फ्रिक्शन से भी स्पार्क बनता है, फ्रिक्शन से करंट बनता है. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस करंट. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज स्टैटिक करंट. ऐसा नो बन सकता है? अभी महसूस किया ऐसे? ऐसे किसी को हाथ लगा एकदम से करंट लगता है? ट्रू. ओके, तो दिस इज देयर एवरीवन. देखो कितने स्मार्ट लोग हैं यहां पर. दिस इज देयर. ये सॉलिड है, क्रस्ट. ये सॉलिड है, मेंटल. मोशन में कौन है? हु इज इन मोशन? विच वन इज इन मोशन? दिस वन इज इन मोशन. वेरी गुड. दिस वन इज इन मोशन. एंड आर दे रबिंग अगेंस्ट ईच अदर? आर दे रबिंग अगेंस्ट ईच अदर? रबिंग अगेंस्ट ईच अदर तो हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन बन जाए, अलग हो जाए, आयनाइजेशन हो सकता है. व्हाट इज दिस? आउटर लिक्विड कोर. इन आउटर लिक्विड कोर चार्ज इज इन मोशन. Charge is in motion. That means outer liquid core has what? Charge in motion is what? Everyone, charge in motion is what? Current. Amazing. Current is moving. Is there any material solid which can get magnetized? Is there any material very favorable for magnet? Oh yes sir, this is there. Will it get magnetized? Magnetized due to what? Due to the current flowing. Magnetized due to electromagnetism. Why earth has magnetism? Thank you भगवान जी, जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं. Thank God for giving us the core which is dual nature. Dual. Dual means two type. Solid and liquid core is a blessing for earth. Because of this, earth carries magnetism. ये सुनो, how core is moving. रोटेशन चल रही बेटा, चीजें सब मूव कर रही. I will be teaching you tomorrow that there is movement in this also. इसको बोला जाता है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन हो रहा है. I understand your question is why are they moving? Because convection is happening. Everyone okay? So earth is a magnet. Earth is a magnet because earth core is neither completely liquid nor completely solid. Yes, and earth will continue to have magnetism till the current flow. Yes or no? Remember शोले का डायलॉग, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी. जब तक, as long as there is the dual nature of the core, one solid, one liquid, we will have magnetism. Sir, can this end? Oh yes. Is the earth cooling down? Is the earth cooling down? Can the outer core also, if too much of cooling happens, can this also get solidified? If everything becomes solid, what will happen? If everything becomes solid, what will happen? Electromagnetic story, cool वाली बात खत्म हो जाएगी. Current will stop. This coil, if you stop this coil and the current, will there be magnetism in this? No. School में बताया ना बंद हो जाएगा ये. So that is going to happen. True or not? Everyone okay? तो बहुत से लोगों का फोकस ये है, सर कालिया अब तेरा क्या होगा, बसंती नाचेगी. करंट पे ध्यान देना है, ये नहीं कि बसंती पे ध्यान देने लग गए. सिंपल सा आइडिया था. आई थॉट उसको साइंस से, स्कूल से कनेक्ट करते हैं. इतनी सी बात है. सो व्हाई इज अर्थ
Earth's magnetism is called geomagnetism. Geomagnetism. Earth has temporary magnetism. It is not permanent. Why it is there? Due to dual nature of core. What is happening? Electromagnetism is the karan. का कारण क्या है? What is the reason? Electromagnetism is it. Can it be lost? It may be lost after billions of years. Sir, how do you know that? Planet Mars has already lost it. Mars has lost. Mars की मैग्नेटिज्म खत्म हो गई है. It used to have. अब कोई पता नहीं why somebody, I don't know what level of physics is this, why somebody is saying sir then gravity will end, then gravity will end. क्यों कर रहा है भाई gravity खत्म? Yes or no? Two bodies attract each other with the force G m1 m2 by r square. फिजिक्स की पोल मत खोलो, जबरदस्ती जोड़ो मत. ग्रेविटी विल एंड. इज एवरीवन ओके? ग्रेविटी तो रहेगा ना, पिंड है तो ग्रेविटी तो है. इज एवरीवन ओके? Recent controversy about change in direction and rotation of core. There is no controversy, beta. These magnetic poles are shifting. That is called magnetic pole shift, magnetic reversal. That is not for GS student. That is for geography optional student. Everyone, will you trust me? Should I decide where to cut? GS वाले को optional वाला तो नहीं करवाना है. Yes or no? Is everyone okay? मुझ पे विश्वास रखो, वो तो मैं काट दूंगा ना. तो somebody asked me, सर अगर ये मैग्नेटिज्म चला गया तो क्या होगा? If lost, what will happen? क्या होगा अगर मैग्नेटिज्म चला गया अर्थ का? What will happen? So this is your homework. This is your homework. What is the importance of magnetism? What is the importance of magnetism? ठीक है, कहानी सुनोगे? Are you interested in a story? Are you interested in a story? Yes. Interested in a story? Somebody says geography मेरा optional है. So keep that. I'm teaching GS students. I don't want to make their life difficult. Yes or no? All of you are reading this. Many things you are reading for the first time. Many of you are used to memorizing things. But what am I doing? I am first building the concept and then saying, अब समझ में आया तो अपने आप natural हो जाएगा. Yes or no? So everyone, there is a story. There is this boy. Tibet. He wants to join a very important Tibetan Gurukul और मोनेस्ट्री बोलते हैं. Yes or no? And for that there is no road. No road. Absolutely no road. Everyone please pay attention. कोई सड़क नहीं है, इस बच्चे को यहां तक पहुंचना है. Everyone has a dream to be a part of this Gurukul. जो भी बढ़िया पढ़ना चाहता है, यहां पे आना चाहता है, बच्चे की बहुत ज्यादा इच्छा है. This kid wants to go there. Yes or no? He is selected. He is selected and he has to reach there on 24th February. कल जाना है. 24th February he has to report over there.
and he decides to go over there. Yes or no? तो ध्यान दीजिए, कोई बोल रहा है सर हेलीकॉप्टर से जाएगा, यहां से जाएगा, कहानी सुन लो। और कहानी तुम ही बदल सकते हो, तो स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ, काहे आईएएस। यस, गुड आइडिया। तो दिस बॉय कम्स ओवर हियर, पूरी मेहनत करके पहुंचा है, एंड ऑन 23rd Feb it is night time and it is dark. He is late. कल सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना है. If you do not report at 6 a.m. in the morning, you do not get admission. And this boy reaches the mountain foot at evening sundown. शाम हो गई है, सूरज नीचे चला गया है, बच्चा घबरा रहा है, उसका सपना है that I have to reach. No matter what, मुझे वहां पहुंचना है. That हो रहा है, लेट हो गया, नहीं पहुंच पाया, बहुत अंधेरा है. He sees a hut over here. उसमें थोड़ी सी लाइट आ रही. And he goes to the hut and he says that I have to reach that Gurukul. कल मुझे गुरुकुल पहुंचना था, मैं लेट हो गया, मैं क्या करूं, रात में डर भी लग रहा है, मैं यहां रुक जाऊं. So there is an old man who's standing here. बेटा ये लो लालटेन. लालटेन देखिए आपने, एक लालटेन, ये लालटेन लेकर पहाड़ पे चढ़ जाओ. गो एंड रीच दिस माउंटेन. कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट. पूरी रात बाकी है बेटा, लालटेन लेके चले जाओ. इसे चाचा सड़क तो थी नहीं, मैं किसी तरह से आ गया, पहाड़ पे गिर गया तो पूरा रास्ता ही अंधेरा है. एवरीथिंग इज डार्क ओवर देयर. कैसे पहुंचूंगा ऊपर तक? द ओल्ड मैन सेड, बेटा तुम्हारे पास लालटेन? उसने कहा लालटेन है लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे. आई एम नॉट एबल टू सी द वे. इतनी दूर आप लालटेन से चलाएंगे? तो द ओल्ड मैन सेड, बेटा कितना चाहिए तुमको? कितना रास्ता दिखना चाहिए? यू शुड बी एबल टू सी व्हाट इज अराउंड यू. आप यहां पहुंच जाइए, जितना आपको दिख रहा है उतना ही तो चाहिए. पूरा रास्ता क्यों देखना है? आप में से बहुत से लोग, मेनी स्टूडेंट्स लिसनिंग टू मी आर जस्ट बिगनर्स. मेनी ऑफ यू हैव नॉट इवन कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन. मेनी ऑफ यू वेंट टू स्कूल्स जहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई. मेनी ऑफ यू वर नॉट सीरियस इन योर स्कूल एंड कॉलेज डेज, बट नाउ यू हैव द करेज टू टेक दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस. तो डर लग रहा है सर, आपने अर्थ के अंदर बता दिया 2 तरह का कोर है, आज बता दिया, पकड़ लेंगे. सर लेकिन आपने डार्क मैटर नहीं बताया, साइंस एंड टेक के टीचर बता देंगे. सर मुझे डर लग रहा है. क्या दिया आज? लालटेन दिया है. छोटा सा लालटेन लेकर जियोलॉजिस्ट अंदर गए, उनसे मैंने जानकारी ली. आई टुक सम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दोज जियोलॉजिस्ट एंड आई एम हैंडिंग यू ओवर दिस लालटेन. चढ़ जाओगे अपने सपने तक? विल यू रीच योर ड्रीम? क्या डर लग रहा है? कितने लोग हैं इस क्लास में? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस क्लास? यू एंड आई. आई एम ऑन योर साइड. व्हाट इज नीडेड? आज लालटेन भी है. सब समझ तो आ रहा है लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया. और पढ़ेंगे, क्लास के बाद पढ़ेंगे. यस, डाउट्स पूछने को बोल रहा हूं, आज डाउट्स में पूछेंगे. पहले पहले कदम ले रहे हो और डर रहे हो. किससे डर रहे हो? उससे जो क्लास में बैठ के गोभी का पराठा खा रहा है. गोभी का पराठा खा रहा है, मजे से एंजॉय करेगा. ठीक है, जब परीक्षा की तैयारी करेगा, when that person who's having गोभी का पराठा right now, when he prepares, on that day he or she will remove गोभी का पराठा. उस दिन वो लालटेन लेगा. अब एक बात बताओ, मुझे आपको लालटेन देनी थी, आप गोभी का पराठा खा रहे हो, तो कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में आ जाना.
But if you were listening to me and you have the lalten today, ये lalten, this lalten is enough to reach our dream, no matter what. क्लासेस को मिस मत करो. बीच में आ रहे हैं, ये क्लास कब से शुरू हुई, कहाँ तक जाएगी, एक ही चीज दिखनी चाहिए, यहां पहुंचना है. सर आपने बताया नहीं आप पैसिफिक ओशन में कूदे कि नहीं कूदे. मेरा लालटेन था, मेरे सपने, मैंने क्या क्या किया, तुम्हें क्या मतलब. नाउ इट्स योर लालटेन एंड आई एम सपोज टू गिव इट. ट्रू और नॉट. सर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी. सवाल है, गलत सवाल है. इज इट ओके? कैन यू आस्क रॉन्ग क्वेश्चंस टू मी? यस और नो? एम आई ऑफेंडेड? क्या आपको लगता है मुझे गुस्सा आ रहा है, अरे ऐसा गलत सवाल पूछ लिया? नहीं. इफ आई से योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्या आप उसे कह सकते हो हाँ ठीक है छोड़ आगे बढ़ते? ट्रू और नॉट? क्या चाहिए? लालटेन और ये रिजॉल्व. तो लड़का रात को जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि कल सुबह 6 बजे अगर ये नहीं पहुंचा, यहां तक आना बेकार है, अपना भी बेकार है. आंसर के साथ जब ये टीम जुड़ी है तो हमारा सपना ये है हर बच्चे के पास लालटेन होगा. और जो भी बच्चा, एनी स्टूडेंट और एनी चाइल्ड हु हैज दिस कन्विक्शन इन हिज और हर ड्रीम्स टू रीच दैट, वो लालटेन काफी हो. आप लड़का हो, लड़की हो, आप ग्रामीण हो, गांव से आते हो, शहर से आते हो, यू आर हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, बॉय, गर्ल, गुड एट स्कूल, बैड एट स्कूल, सब माफ है, सारे खून माफ है. ओनली वन थिंग, क्लास चल रही है, क्लास को समझना है, लालटेन लेकर आगे बढ़ जाना है. यू विल फाइंड सन विल राइज सून. यू विल नॉट इवन रिक्वायर दिस लालटेन. यू विल नॉट इवन हैव टू थैंक सचिन सर, थैंक यू सर वो लालटेन दिया था, बिकॉज इतनी रोशनी आप ही बन जाओगे. यू विल बिकम द सन फॉर पीपल अराउंड यू. बट टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ डार्कनेस. लेट मी हेल्प यू विद द लालटेन. दैट, थैंक यू. It was a pleasure talking to all of you, and I am very, very sure that if you are consistent and the Josh is high, you are going to go into your result. Have a great day.